So let's do one more question based on it, based on that concept. So the question is 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4 plus 1 by 3 minus 1 by 6 minus 1 by 8 plus 1 by 5 minus 1 by 10 minus 1 by 12. We need to show that this sum is equal to 1 by 2 log 2. Solution. So again the same process. Put a bracket. In the first bracket, what we will do, 1 minus, we will put 1 minus 1 by 2 and 1 minus 1 by 2. So there is a sign change here. Sign change है. So we will close this bracket plus. बट सी जब तक ये माइनस साइन चलता रहेगा ना, माइनस साइन जैसे जैसे ही साइन चेंज होता है, तो जब तक ये साइन चलेगा वो सारी टर्म्स आपको फर्स्ट ब्रैकेट में ही लेनी है. आई मीन टू से एवरी ब्रैकेट शुड स्टार्ट विद द प्लस साइन. तो जैसे यहाँ पर भी माइनस है ना, सो माइनस 1 by 4 एंड यू विल क्लोज दिस ब्रैकेट. सो देयर शुड बी जस्ट वन साइन चेंज इन दिस ब्रैकेट. सो प्लस से माइनस एक ही साइन चेंज हुआ ना, बट माइनस के दो टर्म्स हैं तो दोनों साथ ली जाएंगे. प्लस सिमिलरली 1 by 3 minus 1 by 6 minus 1 by 8. Then in the third bracket there is 1 by 5 minus 1 by 10 minus 1 by 12. Bracket closed. Up to so on. Now in the first bracket जो पॉजिटिव टर्म्स है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का साइन प्लस है, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का साइन प्लस है, थर्ड ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म का साइन जो है वो प्लस है. अब इसकी nth टर्म बनाओ. क्या आने चाहिए nth टर्म? आई मीन टू से जब n इज़ इक्वल टू 1 है तो 1 होना चाहिए, जब n इज़ इक्वल टू 2 है तो 3 होना चाहिए, n इज़ इक्वल टू 3 पर देयर शुड बी 5. सो व्हाट शुड बी द nth टर्म? 2n माइनस 1. सो यहाँ पर क्या आ गया nth टर्म? 2n माइनस 1. ब्रैकेट क्लोज्ड. नाउ माइनस साइन. माइनस इन द फर्स्ट ब्रैकेट जो माइनस की टर्म्स हैं वो दोनों लिखी जाएंगी 1 by 2 प्लस 1 by 4, बट लास्ट टर्म 1 by 4 है, सो सर्कल इट. इन द सेकेंड ब्रैकेट देर इज़ 1 by 6, देन देर इज़ 1 by 8 एंड द लास्ट टर्म इज़ 1 by 8 प्लस 1 by 10 प्लस 1 by 12. लास्ट टर्म हियर इज़ 1 by 12. सो अब nth टर्म के लिए हमें इस लास्ट टर्म के हिसाब से सीक्वेंस बनानी है. सो हियर इट इज़ 4, here it is 8, here it is 12. So it means n is equal to 1 के लिए it should be 4, n is equal to 2 it should be 8, n is equal to 3 it should be 12. It means the last term has to be 1 by 4n. The last term has to be 1 by 4n. Understood? Now again we need to introduce that sequence gamma n, है ना. So we will let gamma n to be equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus up to so on minus log n. Now we have to make this series. पूरा हर ब्रैकेट में ये सीरीज़ बनानी है हमें. So in the first bracket there are even terms missing. यहाँ पर even terms नहीं है ना. So we will add and subtract the even terms in order to make this series. So we will do is 1 plus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1 by 4 plus 1 by 5 and the last term is 1 by 2n minus 1, but I told you कि we have to take the multiple of n. So we will add 1 by 2n, we will subtract 1 by 2n here as well. Now in the second term you can take 1 by 2 out, so it will be 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5. So we don't need to add and subtract anything in the second bracket. Second bracket में कुछ भी add या subtract करने की ज़रूरत नहीं है. Now in the first bracket keep that sequence 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus up to so on till 1 by 2n. ठीक है. एंड जो माइनस की टर्म्स हैं जैसे -1 by 2,
-1/4, सो ये +1/4 हो गया. देन दिस विल बी +1/6 एंड लास्ट में इट इज़ -2n, सो +1/2n यहाँ आ गया. -1/2, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 plus up to so on plus 1/2n. Okay, now same way we need to define that gamma n. हम define कर चुके हैं. So as per gamma n, this first term will be gamma 2n plus log 2n plus log 2n minus, you can take 1/2 out here from the second bracket, so it is 1 plus 1/2 plus 1/3 plus up to so on plus 1/n minus 1/2, and this is also gamma 2n plus log 2n plus log 2n. Okay, so this is equal to gamma 2n plus log 2n को break करो as log 2 plus log n minus 1/2, and this is gamma n plus log n minus 1/2, this is gamma 2n plus log 2 plus log n. This is equal to gamma 2n plus log 2 plus log n minus 1/2 gamma n minus 1/2 log n minus 1/2 gamma 2n minus 1/2 log 2 minus 1/2 log n. ठीक है, सो देखो ये 1/2 log n 1/2 log n got cancelled out, एंड सिमिलरली नहीं और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा. ओके, नाउ टेक लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट गामा 2n प्लस log 2 इज़ ए फाइनाइट वैल्यू minus 1/2 limit n tends to infinite gamma n minus 1/2 limit n tends to infinite gamma 2n minus 1/2 log 2. Now this is gamma plus log 2 minus 1/2 gamma minus 1/2 gamma minus 1/2 log 2. ठीक है, so you can see that this gamma got cancelled out and we have log 2 minus 1/2 log 2, and this is equal to 1/2 log 2, and ये हमारा आंसर है. All good.